Assalamualaikum everyone. How are you all? My voice is clear? मैम मेरे Yes, एंड पे ma'am. वॉइस क्लियर नहीं है। मैम क्लियर है वॉइस आपकी। अच्छा चलिए फिर इधर इशू होगा। जी मैम बताइएगा। कौन सा मॉड्यूल ओपन करना है? Yesterday we have completed all the 6 test information. And मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आप सबकी तरफ? ओके मैम शायद आप सिम इशू है। आप वेट करें, मैं जब तक अपनी लोकेशन चेंज करती हूँ। ओके बताएं, अब ठीक है मेरी वॉइस? जी मैम अब ठीक है। ठीक है। Okay, today we are discussing about practice lessons for reading skills. So first practice lesson for reading skill is about true false not given. So please open it first of all. कल हमने इसकी टिप्स देख ली थी कि हमें रीडिंग को करना कैसे है, तो इसलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिस रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 1, द थीम्स जर्नल। अगर अब हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने जो पढ़ा था किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इन्हें सोल्व करने की क्या टेक्निक्स यूज करनी होंगी। तो ये आपके पास पैसेज 1 गिवन है, द थीम्स जर्नल। ये पूरा पैसेज है। उसके बाद नीचे आपको क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, और उन्होंने बता दिया कि आपको क्वेश्चंस को आंसर्स कैसे करने हैं, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू कब होगा? द स्टेटमेंट मैचेस द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। जो हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो स्टेटमेंट मैच करती है उस इंफॉर्मेशन से जो हमें पैसेज में गिवन है, देन इट इज ट्रू। फॉल्स व्हेन द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। ठीक है, आंसर फॉल्स तब होगा जब वो इंफॉर्मेशन जो हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है वो ऑपोजिट होगी जो हमें पैसेज में गिवन है उसके। ठीक है, फिर फॉल्स होगा। नॉट गिवन तब होगा द इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन द पैसेज। फाइन, लुक एट द फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। तो इसका ये होता है रीडिंग पैसेज के करने का कि पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके कीवर्ड्स को देख लेंगे, उन्हें अपने माइंड में सेट कर लेंगे, हमें इन चीजों के बारे में आइडेंटिफिकेशन करनी है रीडिंग करते हुए।
तो हम फिर उसे देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द थेम्स टनल वाज द फर्स्ट टनल एवर बिल्ट अंडर अ रिवर। तो हमने देखा ये ट्रू है या फॉल्स है। फाइन। तो आप रीडिंग पैसेज की तरफ जाएं, ऊपर देखिए स्टार्ट से हम रीड करते हैं इसे कि जो थेम्स टनल्स है वो फर्स्ट अंडर अ रिवर बनी थी, पहली टनल थी जो अंडर रिवर बनी थी। तो स्टार्टिंग इसकी लाइन देखें, द थेम्स टनल वाज अ टनल बिल्ट अंडर द रिवर थेम्स इन लंदन। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्री करते हैं आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है? जी पार्टिसिपेंट, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, फिर अब हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसे हमने ट्रू मार्क कर लें अपने पास। आप कोई रजिस्टर लिखें और पेन, उस पे हम आंसर नंबर 1 लिख लें ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है द थेम्स टनल वाज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हमने इसे देखना है कि ये एट्थ वंडर थी पूरे वर्ल्ड पे। इट वाज द फर्स्ट सब एक्वस टनल एवर बिल्ट। अब हमने उससे आगे वाली लाइन पे देखना है जहाँ हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिल चुकी थी, हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। It was the first sub-aqueous tunnel ever built, and many people exaggeratedly claimed it was the eighth wonder of the world at the time it was opened. So, what you say? Is it true or false? Okay, I'm also agree with this. It is true. Now come toward the third statement. Third is about people were drawn from all over to see the Thames Tunnel. So after the second statement, जहाँ हमें second statement मिली थी उससे आगे हम देखेंगे, तो उससे आगे है it was opened in 1843 to pedestrians only and people came from far and wide to see the marvel. So what is this? True or false? Yes. ओके, हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट अभी जो हमें लग रहा है हमें वो मार्क करना है। उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर वो कुछ स्टेटमेंट हमारे आंसर्स के अकॉर्डिंगली अगर कुछ फॉल्स होते हैं तो वो क्यों है, तो हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के दोबारा वो बात क्लियर भी करेंगे कि अगर वो फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। द टनल वाज यूज्ड मोर बाय द मिडिल एंड अपर क्लासेस। ठीक है, उन्होंने कहा जो टनल थी वो ज्यादा यूज किन्होंने की, अपर और मिडिल क्लास लोगों ने की थी। तो इससे आगे देखें, द डे इट वाज फर्स्ट ओपन इट अट्रैक्टेड 5000 people to enter the tunnel and walk its length of almost 400 meters. The Thames Tunnel was used by people from all classes. So the working class used it for its functional use of crossing from one side of the river to another, while for the middle classes and upper classes, it was a tourist experience. So I think so it is false. ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर टाइप मुझे की जो लग रहा है क्लास नॉट थी। गिवन बनेगा, नॉट गिवन, क्योंकि उन्होंने एक क्लास की बात की ना, अपर और लोअर क्लास की तो उन्होंने बात ही नहीं की। और उसके आगे जो उन्होंने सेंटेंस दिया ना, ये कॉमा लगा के उन्होंने फिर फर्दर उस स्टेटमेंट को दिया ना, तो मुझे लग रहा है कि वर्किंग क्लास की बात की गई है, तो ये नॉट बनेगा। ठीक है, आपकी भी हम सजेशन रख लेते हैं। ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि उन्होंने कॉमा लगा दिया तो इट मीन्स वो बात नेक्स्ट हो चुकी है। तो हम नॉट गिवन करते हैं। और फोर्थ हो गई, फिफ्थ को देखिए, पीपल वर एबल टू ट्रैवल बाय सी और लैंड इन दोज डेज। कहते हैं कि इस टनल के थ्रू क्या पीपल अच्छा, मुझे ना आपकी आवाज सही नहीं, मेरी तरफ से इशू है या बाकियों को भी नहीं आ रही सही तरह से? मुझे ना नहीं आ रही सही आवाज, मुझे लग रहा है मेरा ना इंटरनेट नेट का मैम इशू है। सरवीना की वॉइस बिल्कुल ठीक है मैम, आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं एक्चुअली मैम का ना माइक म्यूट है, तो किसी को भी वॉइस नहीं आ रही। चलें जी, तब तक अगर मैम के एंड पे इशू है तो हम खुद देख लेते हैं। अभी तक हमने कितने जी 3 स्टेटमेंट्स को रीड किया। यहाँ आप में से कोई इसको रिवाइज करवाना चाहेगा कि ईच स्टेटमेंट को हम यहाँ पे रीड करके फिर उसका आंसर देखते हैं और हम रीजन यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं कि उसने क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा हुआ है और रिस्पॉन्स में उसको जो है वो आंसर में क्या है जिसकी वजह से हम ट्रू कर रहे हैं। एनी पार्टिसिपेंट जो इंटरेस्ट ले रहा है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे है जी, the Thames Tunnel was the first tunnel ever built under a river। ठीक है, तो इसका हमने रिस्पांस देखा। अब यहाँ पे कोई बताना चाहेगा कि ये एक्चुअली ट्रू जो है वो किस तरह हुआ था, इसके ट्रू होने के रीजन को बताएगा। ट्रू लिखा हुआ है ना, थॉमस टनल वाज अ टनल बिल्ट अंडर द थॉमस रिवर थॉमस इन लंदन। इट वाज द फर्स्ट सब्सिक्वेंट टनल, तो मतलब ये पहला था जो इनसाइड द रिवर। यस, इसका ट्रू होगा, स्टेटमेंट मैच कर रही है। ठीक है जी, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। थॉमस टनल वाज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसको वेरीफाई हम कर लेते हैं पैराग्राफ से। यस प्लीज। First subsequent tunnel ever built, and many people exaggeratedly claimed it was the 8th wonder of the world at the time it was opened। अच्छा, सबसे पहले जी जी बिल्कुल, सबसे पहले एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूँ, कोई पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड है इस पैसेज को, कोई रीड करते हैं यहाँ पे।
स्टार्ट से लेके, ठीक है, इसको लास्ट तक ना, इस पैसेज को कोई यहाँ पे रीड कर दे प्लीज, और वो भी लाउडली। फर्स्ट थिंग इससे आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज बहुत जरूरी है, आप इसको पहले रीड करें तो फिर हम इस पे जो है वो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay. यस Thames एनीवन? Tunnel was a tunnel built under the river Thames in London. It was the first subsequent tunnel ever built, and many people exaggeratedly claimed it was the eighth wonder of the world at the time it was opened. It was opened in 1843 to pedestrians only, and people came from far and wide to see the marvel. The day it was first opened, it attracted 5,000 people to enter the tunnel and walk its length of almost 400 meters. The Thames Tunnel was used by people from all classes. The working class used it for its functional use of crossing from one side of the river to another, while for the middle classes and upper classes, it was a tourist experience. In the age of sail and horse-drawn coaches, people traveled a long way to visit the tunnel, but this was not enough to make the tunnel a financial success. It had cost over 500,000 to complete, which in those days was a considerable amount of money. जी जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। ये हमारे पास ये जो साइन बना हुआ है, ठीक है, 500,000 का, ये कोई बताना चाहेगा क्या है जी? ये है पाउंड्स, पाउंड्स का साइन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे जी? 500,000 पाउंड्स, ठीक है। और जो डॉलर का साइन होता है वो किस तरह होता है जी? वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम उसको पढ़ते हैं जी 500,000 डॉलर्स, ठीक है। लेकिन ये वाला जो साइन है ये है जी 500,000 पाउंड्स। यस प्लीज कंटिन्यू। It had cost over 500,000 pounds to complete, which in those days was a considerable amount of money. However, even though it attracted about 2 million people each year, each person only paid a penny to use it. The aim had been for the tunnel to be used by wheeled vehicle to transport cargo so that it could bring in a profit. But this failed, and the tunnel eventually became nothing more than a tourist attraction selling souvenirs. In 1865, the tunnel became part of the London Underground Railway System, which continues to be its use today. जी बाकियों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का मौका मिल गया, सही है। बिकॉज फर्स्ट टाइम देखेंगे तो सबके लिए सब कुछ न्यू होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। और अगर हम वेरीफाई करते हैं जी मैम की वॉइस ठीक है तो फिर वो हमें कंटिन्यू करवाएं। जी मैम जरमीना जी, मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी, अब वॉइस आ रही है। ठीक है, ओके। हम फोर्थ स्टेटमेंट तक थे, फिफ्थ को देख रहे थे। आप सबको पहली फोर्थ स्टेटमेंट क्लियर हो गई है तो हम फिफ्थ से स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, fifth statement, people were able to travel by sea or land in those days. फाइन, उन्होंने कहा कि इन डेज, ये जो दिन थे जब टनल बनी, तो इन दिनों की बात है कि जो पीपल थे वो इस काबिल हो गए कि वो सी और लैंड के थ्रू ट्रैवल कर सके। तो हम यहाँ देखते हैं, ओके, यहाँ से देखें, इन द एज ऑफ सेल एंड हॉर्स ड्रॉन कोचेस people traveled a long way to visit the tunnel, but this was not enough to make the tunnel a financial success. So what do you think? It is true. आई थिंक इट इज ट्रू बिकॉज पहले हम इस स्टेटमेंट में पढ़ चुके थे। आप देखिए, इससे पहले वाले कहा था द Thames tunnel was used by people from all classes and sorry, इससे ऊपर देखिए,
The day it was opened, it attracted 5,000 people to enter the tunnel and walk its length of almost 400 meters. The Thames Tunnel was used by people from all classes. The working class used it for its functional use of crossing from one side of the river to another, while other for the middle class and upper classes it was a tourist experience. In the age of sail and horse-drawn coaches, people travel a long way to visit the tunnel. So I think it is true. बिकॉज सेल यहाँ पे आ रहा है जैसे कि वो एज अ शिप यूज कर रहे हैं कि वो सी को कवर कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे सी को, और लैंड के लिए वो हॉर्स कोचेस का यूज कर रहे थे. So fifth statement is about true. Okay, now come toward the sixth. The aim of the tunnel was to turn a profit as a tourist attraction. क्या उन टनल बनाने का एम यही था कि वो प्रॉफिट कलेक्ट कर सके फ्रॉम टूरिस्ट अट्रैक्शंस के थ्रू? तो यहाँ देखें, in the age of sail and horse-drawn coaches, people travel a long way to visit the tunnel, but this was not enough to make the tunnel a financial success. It had cost over $500,000, pound, to complete, which in those days was a considerable amount of money. However, even though it attracted about 2 million people each year, each person only paid a penny to use it. ओके पहले उन्होंने बता दिया इसके ऊपर कॉस्ट कितने पाउंड्स की, $500 की, $500,000 की उसके ऊपर कॉस्ट हुई है. और उसके बाद वो कह रहे हैं जो वो से अर्न कर रहे थे वो पूरे ईयर की बात करते 2 मिलियन पीपल उसके ऊपर से मूव करते थे और वो एक पेनी देते थे. तो इस लिहाज से मुझे ये फॉल्स लगता है. 6 इज फॉल्स, क्योंकि ये उनका जो फाइनेंशियल था ना वो ये नहीं था कि इसे कोई लोग यूज करें एज अट्रैक्टिव या टूरिस्ट के फॉर्म में यूज करें. उनका था कि वो लोगों को गुजरने का रास्ता प्रोवाइड करें और उसके थ्रू उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिली. ठीक है, 6 इज फॉल्स. So come toward the seventh. The statues of the tunnel could be bought as souvenirs. So seventh statement के according अगर हम बात करें, the aim had been for the tunnel to be used by wheeled vehicle to transport cargo so that it could bring in a profit. But this failed and the tunnel eventually became nothing more than a tourist attraction selling souvenirs. I think बोट की उन्होंने बात नहीं की तो इसलिए ये नॉट गिवन आएगा. फाइन. और ना ही उन्होंने कुछ स्टैचूज की बात की है. ठीक है. द टनल इज, 8th स्टेटमेंट देखें. द टनल इज नो लॉन्गर यूज्ड एज अ पेडिस्ट्रियन वॉक वे टू क्रॉस द रिवर. ओके, इससे नेक्स्ट लास्ट लाइंस को देखते हैं. In 1865 the tunnel became part of the London underground railway system which continues to be its use today. ओके, 1865 में उन्होंने कहा कि वो एक रेलवे का पार्ट बन गई थी, रेलवे सिस्टम का अंडरग्राउंड. ठीक है, और अब तक वो ऐसे एज अ रेलवे सिस्टम में ही यूज हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू 8th स्टेटमेंट इट इज ट्रू. फाइन, क्योंकि उन्होंने जो जिस एम से बनाया था वो पेडिस्ट्रियन वॉकवे के लिए बनाया था, बट वो नहीं यूज हुआ, ज्यादातर वो यूज नहीं हो सका, तो उन्होंने क्या किया, उसे अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम का पार्ट बना दिया. सो 8th स्टेटमेंट इज ट्रू. फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे बता दें कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं.
Okay, look at the answers of this. First answer of this passage is true. It was the first subaqueous tunnel ever built. And look at the second. We have right the second statement is true, but actually it is false. Why it is false? Many believed it was the eighth wonder of the world at that time. It was something people believed at that time. It was not a fact. So that's why second is false. Fine. Now look at the third. True. So it's our true. Okay. Drew people from far and wide. The word draw in this context means to attract from all over. Is an expression which doesn't mean from every individual country in the world. It was a vague expression from many places. Okay, look at the fourth answer is about not given. The passage does not state how much each class used a tunnel. ओके इसकी रीजन यही नॉट गिवन इसलिए कहा गया उन्होंने स्टेटमेंट में हमें कहा था द टनल वाज यूज्ड मोर बाय द मिडल एंड अपर क्लासेस फाइन उन्होंने हमें कोई उनकी क्वांटिटी नहीं बताई थी कि कौन सी क्लास ज्यादा यूज कर रही है सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिवन सो फिफ्थ वन इज अबाउट ट्रू in the age of sail and horse-drawn coaches the sail refers to boats sea and the horse-drawn coaches were the method of land travel. Sixth one is false as we have write down already. So the aim had been for the tunnel to be used by wheeled vehicles to transport cargo so that it could bring in a profit. So it was false. ठीक है उन्होंने कहा था उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने बनाया क्यों है इसे इस टनल को क्योंकि वो यानी कि टूरिस्ट के अट्रैक्शन के थ्रू अर्न करना चाहते थे बट एक्चुअली नहीं ऐसा कुछ नहीं था उन्हें व्हील्ड व्हीकल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए इसे कंस्ट्रक्ट किया था okay seventh is not given so it is also our right answer there is no information about what type of souvenirs were sold फाइन उन्होंने जस्ट सोवेनिर्स की बात की थी स्टेचूज की भी नहीं की ना ही उन्होंने कुछ उसका बताया टाइप का so eighth one also true in 1865 the tunnel became part of the London underground railway system which continues to be its use today so यहाँ तक क्लियर है आप सबको मैम मेरी वॉइस आ रही है जी आपकी वॉइस आ रही है जी किस कोई और पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कर सकता है प्लीज मेरे एंड पे बहुत इशू है इंटरनेट का कोई अवेलेबल है जो पीसी से जिससे ज्वाइन किया हो जैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुफियान रज़ीक यस अब्दुल अलीम मैम वैसे लाइट का इशू चल रहा है तो आप ऐसा करें कि स्पीकिंग का मॉड्यूल जो है वो डिस्कस कर लें क्योंकि बाकी सारे मॉड्यूल्स हो चुके हैं तो स्पीकिंग पे आज ना बाकी हाफ आवर बात कर लें तो फिर हम इसको बाद में लाइट का इशू सॉल्व होगा तो बाकी कर लेंगे मैम फातिमा आई थिंक स्पीकिंग हम कर चुके हैं उस मॉड्यूल्स को हम टोटली डिस्कस कर लिया था तो नहीं एक्चुअली अभी स्क्रीन शेयर नहीं ना हो रही मेरी तरफ भी लाइट चली गई है तो मैंने भी मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ मैं इसलिए कह रही थी कि अभी फिलहाल कोई और टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं हम लोग जितना टाइम है या जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं फाइन जी स्पीकिंग से रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए स्पीकिंग का हमने बताया था कि इसके टेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं तो फर्स्ट पार्ट में कहा था इंट्रोडक्शन होती है इंट्रोडक्शन में वो आपके बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम एंड वेयर इज योर होम एंड वेयर इज योर सिटी
and tell about your city, tell about your interest, tell about your studying or work. So these are different type of questions that are relevant to the about candidate introduction. और हमने ये कहा था कि इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो क्यू कार्ड गिवन होता है। क्यू कार्ड में आपको कोई भी टॉपिक गिवन होता है, उसके 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जिनके अकॉर्डिंगली वो आपको कहेंगे कि आप इसके बारे में थिंक करें ओनली फॉर 1 मिनट, और फिर उसके ऊपर आप एक स्टोरी बना के उन्हें 2 मिनट्स के लिए स्पीक करेंगे। कंटिन्यूअसली 2 मिनट्स के करना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए, आप बिल्कुल भी साइलेंट नहीं हो सकते। मतलब नॉर्मल जो आपका वे है बात करने का, आप उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। और जो स्पीकिंग का थर्ड पार्ट था वो डिस्कशन होती है। तो डिस्कशन मैंने आपको कहा था कि उसमें हम जो टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें ये होगा कि आपको 4 to 5 लाइंस बोलनी होंगी, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा आप डिटेल में उसका आंसर करेंगे, ठीक है। और हमने कहा था जो स्पीकिंग टेस्ट है उसका टाइम कितना होता है, मिनिमम 11 मिनट्स एंड मैक्सिमम 15 मिनट्स। फाइन। वैसे किसी का अगर कोई जनरल क्वेश्चन है ना जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई चीज डिस्कस करनी हो ना, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम उस चीज को ना डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी चीज है कि आप कोई क्वेश्चन कर ले या किसी मॉड्यूल के बारे में अगर मजीद कुछ समझना चाहते हैं ना, तो आप वो चीज समझ ले। क्योंकि अभी लाइट का इशू है तो स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, तो हम फिर कल से प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे रीडिंग की। या जो अभी हम लोगों ने यस नो नॉट गिवन वाला, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला मॉड्यूल किया, उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना है तो वो मैम से पूछ लें, वो आपको डिटेल में उस चीज से रिलेटेड बता देंगे। मैम अभी जो पैसेज हमने मतलब किया है प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभी वो जैसे हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे वो मतलब सीक्वेंस में थे, तो क्या सारे पैसेज मिस कराओगे या सीक्वेंस वाइज चेंज भी हो सकता है? नहीं होते कभी? जी जो ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्टली आपको सीक्वेंस में ही मिलते हैं, और जो मैच द हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस होंगे उन्हें थोड़ा सा वो शफल कर देते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमें फाइंड आउट करने में। अदरवाइज इनके लिए बहुत इजी होता है कि जहाँ पे हमें एक लाइन एंड हुई है उसी से नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम ढूंढना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स, एमसीक्यूज, मैच, ये सारे ना इसमें होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। जस्ट मैचिंग हेडिंग और जो होती है ना, आपने फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी मैचिंग हेडिंग बनती है, और मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इस सीक्वेंस में नहीं होते। मैम अलीम भाई को आप फॉलो कर दें, वो बोल रहे हैं मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। मैम जमीना इनको स्क्रीन ओके शेयर अलाउ कर दे, मोहम्मद अलीम को, तो फिर ओके यस मोहम्मद अलीम स्टार्ट इट। यस okay, just wait a second. First of all, look on the questions that are given at the end of the passage. So the first question is, there are question 1 to 9. First statement is about the controversy over the method used in the construction of the pyramids has been solved by scientists. So look at the start of this. The most famous pyramid is the Great Pyramid of Giza, which is actually only one of over 100 surviving pyramids
There is a long-standing question about how the pyramids were built given the lack of technology over 4,000 years ago, but scientists are piecing together the puzzle. The blocks which make up the pyramids were hand from quarries and then transported to the pyramids for construction. This was an incredible feat considering the distance that the raw material had to travel and their enormous weight. So, is it true or not? Controversy over the method used in the construction of pyramid has been solved by scientists. Not given the results over. Not given. But they are talking about scientists. But according to the statement, scientists are piecing together the puzzle. So that's why I think this statement is false. False. Yes. So they are working on it. First statement is false. Okay, look at the second statement. It is possible that ancient Egyptians could have lubricated paths to air transportation by sledge. Okay, उसी से आगे देखें, the blocks which make up the pyramids were hewn from quarries and then transported to the pyramids for construction. This was an incredible feat considering the distance that the raw material had to travel and their enormous weight. The transportation of the material was either by river using a boat or by land using a wooden sledge. Given the softness of the ground, the wheel would have been of little use had it been invented at that time. It is believed that the sand in front of the sledge was wet with water in order to facilitate the movement of the sledge and reduce friction. These sledges were pulled manually or sometimes by using beasts of burden depending on the ease at which the sledges could move over the ground. Interestingly, 2000 years after the pyramid building era of the ancient Egyptians, the Romans moved stones using similar techniques at Baalbek. Once the blocks arrived at the pyramid construction site, it is thought they were moved into place using a ramp and pulley system. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने हमसे पूछा क्या ये पॉसिबल था कि जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे उनके पास कोई लुब्रिकेटेड पाथ था जिसके थ्रू वो हेल्प आउट कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन को बाय स्लेज. So I think it is true. What you say? Because it is true from the line. It is believed that sand in front of the sledge was wet with water in order to facilitate meaning relate to the lubricate. Then the movement of the sledge. Facilitate aid transportation of the sledge. So I think it was true. Fine. Second is true. Now come toward the third point. In the third statement, sleds were dragged by animals, not human. तो ये हमने क्या कहा था? Okay, इसी से आगे देखिए, these sledges were pulled manually or sometimes by using beasts of burden depending on the ease at which the sledges could move over the ground. Interestingly, 2000 years after the pyramid building era of the ancient Egyptians, the Romans moved stones using similar techniques at Baalbek. False.
Yes, I think so. It is false. Okay, now come toward the fourth statement. Fourth statement, the Romans learned the techniques of moving huge stones from the ancient Egyptians. रोमन्स ने लर्न किया उस टेक्निक को कि ह्यूज स्टोन्स को मूव कैसे कर सकते हैं एंशिएंट इजिप्शियन से. तो ये देखिए इसमें है ancient Egyptians, the Romans moved stones using similar techniques at Baalbek. Yes. They didn't learn from the ancient Egypt, so they just used this technique. So I think it would be false. Yes. So that's why it is false नहीं हो सकता because उन्होंने कोई opposite बात नहीं की. हम ये बात कर सकते हैं कि उन्होंने यूज की थी सिमिलर टेक्निक. उन्होंने लर्न नहीं किया, मतलब लर्न उन्हें कहाँ से किया या किस तरह किया ये उन्होंने नहीं बताया. So that's why it is not given. Fine. अब आ जाए फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ. In the fifth statement, the building work of the ancient Egyptians is unrivaled. Unrivaled. So इसे हम देखते हैं. जी क्या स्टेटमेंट किस में लगता है आपको? इसके जो वो लास्ट लाइंस हैं जहाँ हमने देखा once the block arrived at the pyramid construction site, it is thought they were moved into place using a ramp and pulley system. The Old Kingdom period in ancient Egyptian history is also known as pyramid building era. The ancient Egyptians achieved the most remarkable feats of building work, which has still not been surpassed, particularly given the primitive technology used to build them. I think it is also not given. What you say? यस, मेरी आवाज क्लियर है? आप लोगों को मुझे बताएं स्टेटमेंट के बारे में. I think it's not given, but what do you think about it? Okay, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार दोबारा उसके ना स्टेटमेंट को देख लें. The building work of the ancient Egyptians is unrivaled. Okay, हम ना पहले unrivaled का मीनिंग देख लेते हैं डिक्शनरी से, फिर हम समझेंगे. Okay, unrivaled, having no rival, incomparable, supreme, matchless, unexampled, and unsurpassed. Unsurpassed. Yes. यहाँ देखें the ancient Egyptians, second paragraph की second line. The ancient Egyptians achieved the most remarkable feats of building work, which have still not been surpassed, particularly given the primitive technology used to build them. Unrivaled mean unsurpassed.
So not been surpassed, it's a synonym of unrivaled. So I think it is true. Fine. Clear हो गया? अब दोबारा सिक्स स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं. Some people believe that magic may have been used by ancient Egyptians to build the pyramid. ओके वो कहते हैं कुछ लोगों ने ये बिलीव उनका था कि मैजिक यूज हुआ है एंशिएंट इजिप्शियंस के थ्रू. उन्होंने क्या किया कि मैजिक को यूज करते हुए पिरामिड को बिल्ड किया है. उसी से आगे देखते हैं. देयर इज नथिंग रिमोटली मिस्टिकल और मैजिकल अबाउट हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ट एज इज कॉमनली थॉट. Further still, while popular belief is that the Great Pyramid was built using slave labor, this theory has since been debunked. So, I think it is false. What do you think? फोर्स ही लग रहा. False लग रहा है या नहीं? इस लाइन को देखिए. स्टेटमेंट देखते हैं पहले हम. Some people believe that magic may have been used by ancient Egyptians to build the pyramid. ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा है? There is nothing remotely mystical. यहाँ तक बात क्लियर होगी कि कोई भी ऐसे रिमोटली कोई भी इस तरह से कोई चीज यूज नहीं हुई. या फिर मैजिकल अबाउट हाउ पिरामिड्स वर बिल्ट एज इज कॉमनली थॉट. रिमोटली नथिंग रिमोटली मिस्टिकल का मतलब है एक मैजिकल वे के थ्रू ने बनाया गया है. तो इसलिए ये मुझे स्टेटमेंट ना ट्रू लग रही है. ठीक है. नथिंग रिमोटली मिस्टिकल और मैजिकल ये एक ही चीज है. कि उन्हें कोई रिमोट का नहीं जस्ट एक मैजिक था तो नहीं. तो इसके अकॉर्डिंग मुझे स्टेटमेंट है फिक्स है. बाद में हम चेक करते हैं. नेक्स्ट मैम आपकी आवाज द clear ग्रेट नहीं है. पिरामिड. ग्रेट पिरामिड वाज देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ था. द ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट यूजिंग स्लेव टुवर्ड द एट स्टेटमेंट. इट टुक मोर नहीं है. ओके मुझे बताया अब आवाज क्लियर है मेरी? Yes, ma'am. यस अलीम मेरी आवाज क्लियर है? ओके जी फाइन. स्टेटमेंट की तरफ से सेवन स्टेटमेंट हमारी आपको सिक्स तक सारे स्टेटमेंट क्लियर हैं जो हमने. किसी को भी क्लियर नहीं है? आपकी आवाज फिर से कर रही थी. ओके मैंने ये पूछा कि हमने सिक्स स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया है. तो सिक्स स्टेटमेंट तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले. ओके सेवन समझ स्टेटमेंट में को नहीं आया कि ये ट्रू कैसे हो रहा है. ट्रू कैसे हो रहा है? अच्छा चले मैं बताती हूँ. ठीक है आप पहले स्टेटमेंट को देखिए. Some people believe that magic may have been used to build the pyramid. लोगों का ये बिलीव था कि मैजिकल वे के थ्रू उन्होंने इस पिरामिड को बिल्ड किया है. अब ये ऊपर देखते हैं हम. द एंशिएंट इजिप्शियंस सॉरी यहाँ से देयर इज नथिंग from last words of the fourth line of second paragraph. There is nothing remotely mystical or magical about how the pyramids were built as is commonly thought.
नथिंग रिमोटली मिस्टिकल, ये तीन चीजें एक बात है, मतलब कोई भी मशीनरी नहीं यूज की गई, उन्होंने कुछ भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं यूज की, जस्ट उन्होंने क्या किया, मैजिक यूज किया है। ठीक है, नथिंग का जो वर्ड है वो रिमोटली के साथ यूज हुआ है, और मैजिक का वर्ड इनसे सेपरेट है। ठीक है, अगर हम वो तीनों वर्ड्स निकाल दें, देयर इज मैजिकल अबाउट हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ट एज इज कॉमनली थॉट, so according to this statement 6-1 is true. Fine. नथिंग दोनों के साथ नहीं है, मिस्ट्रिकल नहीं और दोनों, मैजिकल दोनों। नहीं दोनों के साथ नहीं है, नथिंग सिर्फ स्टार्टिंग के साथ है, उसके बाद मैजिकल एक ट्रू है। ठीक है, ओके अब 7 को देखें, द ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट यूजिंग स्लेव लेबर, ये भी हमने पढ़ा था, इसी से आगे देखते हैं। फर्दर स्टिल while popular belief is that the great pyramid was built using slave labor, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा 7th स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। But ma'am, अब it was 8th स्टेट, it's not fact. यस मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, प्लीज रिपीट। मैंने बोला कि स्टेटमेंट है कि द ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट यूजिंग स्लेव लेबर, ये एक जी फैक्ट बता रहे हैं। ऊपर तो बोल रहे हैं कि इट वाज बिलीव्ड, बिलीव्ड और फैक्ट में फर्क है ना। ऊपर बोल रहे हैं कि ये बिलीव, फैक्ट तो नहीं है। नहीं, आप ये देखें ना, वाज बिल्ट वाली बात तो क्लियर आ गई ना, पॉपुलर की भी बात होगी कि मोस्टली लोगों का ये कहना था। ठीक है, और फिर वाज बिल्ट यूजिंग स्लेव लेबर, और दिस थ्योरी हैज सिंस बीन डीबंक्ड। डीबंक का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ डिक्शनरी से, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, डीबंक का मतलब है टू एक्सपोज द falseness, falseness of। ओके, उन्होंने कहा बाद में ये जो थ्योरी थी ना, ये उन्होंने फॉल्स